Hello student. In last lecture we had seen some points just like system features and characteristic. In that the system feature there is the six type of characteristic is there. The first one is the objective, second one is standard, third one is environment, fourth one is feedback, fifth one is boundary, and sixth one is interface. Afterward we seen purpose and functions of information systems. So in that we see in the input, process, output and controls. उसके बाद हमने देखा था type of information system. Just we seen the overlook of type of information system. Generally, in a typical organizations divided into the three to four parts. The basic part is operational level, second one is the middle level, third one is the upper level, and fourth one is the executions or upper management level. Generally the information required for user at each level different toward that the end. There are the number of information system that support each level in organizations. So that type of informations we will see in a pyramid diagrams. In that the pyramid diagram, the understanding at the various level of an organization is essential to understand the informations required by the user who operate at their respective levels. So in that the worker is also for the transaction processing system. Then the second level is middle manager. In that the middle manager, the management information system, we can say that the MIS. Third one is the senior managers, means uh, it's also come in a middle level, means decision support system, means DSS. And upper levels executive information system, EIS, means upper level management. So first of all we start from the office automation systems. So in that the office automation system, the operational level is concerned with the performing a day-to-day business transactions of the organizations. जनरली क्या होता है कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में हमारा कंप्यूटर्स, मशीनरीज एंड सॉफ्टवेयर यूज टू डिजिटली क्रिएट, कलेक्ट, स्टोर एंड मैनिपुलेट एंड रिले ऑफिस इंफॉर्मेशंस. हमारी जनरली इंडस्ट्री में हम जनरल जो यूज़ करते हैं जैसे कि एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, या कुछ टेक्स्ट बनाने के लिए हम जनरली डीटीपी यूज़ करते हैं. तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम एप्लीकेशंस जनरली यूज़ करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और office information systems. So office automation system include the following roles and activity. So generally ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जनरली क्या क्या रोल्स रहते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वर्कर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो इंफॉर्मेशन एक्टिविटी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में आएगी. और सेकंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडल करने हैं तो वो हम एम एस एक्सेल में या एम एस वर्ड में यूज़ करेंगे. हैंडलिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटाज, तो जनरली हमारा जो भी न्यूमेरिकल डेटा रहता है तो हम जनरली एम एस एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके उसको हैंडल करते हैं. मीटिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, that kind of thing we will be maintain in a MS Word. So that kind of activity performing in a office information system, or it is nothing but the office automation system. Though generally the functions of office automation systems create data entry and procedures. Number two, generate document and presentations, send mail, maintain the data, and create stand-alone applications. So generally ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी डे टू डे वर्किंग होता है, वो वर्किंग मीन्स हमें मेल सेंड करना होता है, या कुछ मीटिंग की प्लानिंग करनी होती है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं,
या कुछ प्रेजेंटेशंस बनाना होता है, तो ये सब चीज़ें आती है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. Before I said that the office automation system is nothing but the office information systems. Okay, the need and advantages of office automation system. तो जनरली ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो उसमें लेबर एंड टाइम सेविंग होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेस चांस ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स, मीन्स ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से हमारे जो फ्रॉड्स होते हैं मैनिपुलेटिंग द डॉक्यूमेंटेशंस, सो वो डॉक्यूमेंटेशंस हमारे बहुत अच्छी तरह से होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशंस हमारी रहती है. जनरली मेन ऑफिस सूट्स हम क्या क्या यूज करते हैं, तो एप्पल वर्क करेंगे, कोरल वर्क परफेक्टली रहेगा. जनरली आईबीएम में हम लोटस और स्मार्ट सूट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे, सन स्टार ऑफिस यूज करेंगे, और ओपन ऑफिस जनरली हम ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में यूज करते हैं. उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. सो in that the transaction processing system, the TPS are used to record day-to-day business transactions of the organizations. They are used by user at the operational management level. तो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमने पिरामिड डायग्राम में भी देखा था कि हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये वर्कर्स जनरली यूज करते हैं, और ये इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इंक्लूड इन अ ऑपरेशनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल. जनरली ये जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें इंक्लूड होता है. The transaction process systems, they are used by user at the operational management level. The main objective of transaction process system is to answer routine questions. तो इसका ट्रांजैक्शन प्रोसेस का जो भी जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म एंड रिकॉर्ड डेली रूटीन्स ट्रांजैक्शंस नेसेसरी टू दैट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी डेली रूटीन होता है, तो वो रूटीन हम ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम से करते हैं. तो जनरली हमारे क्वेश्चंस या उसके आंसर्स क्या रहेंगे, तो उसमें आंसर जनरली हमारे रहते क्वेश्चंस रहते हैं कि हाउ प्रिंटर वे आर सोल्ड टुडे, मीन्स हमारी कोई इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि हमारे कितने प्रिंटर आज सोल्ड हुए हैं, हाउ मच इन्वेंट्री डू वी हैव एट हैंड, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द XYZ कंपनी. सो हमारे उस कंपनी के अकॉर्डिंगली हमारे ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कितनी है. तो जनरली हमारे इंडस्ट्री में जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम में आते हैं. तो यूजुअली ऑपरेटेड डायरेक्ट बाय अ शॉप फ्लोर वर्कर और फ्रंटलाइन स्टाफ which provide the key data required to support the management of operational. तो TPS जो मेथड है वो हमारे वर्कर्स और फ्रंटलाइन स्टाफ जो रहता है वो जनरली यूज करते हैं. This data is usually obtained through the automated or semi-automated system. Automated system tracking of low level activity and basic transactions. तो उसमें चार से पांच टाइप के ट्रांजेक्शन्स आएंगे. तो फर्स्ट वन इज डेटा एंट्री, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज डेटाबेस मेंटेनेंस, फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशंस, फिफ्थ वन इज इंक्वायरी प्रोसेसिंग. So in that the transaction processing systems, by recording the day-to-day business transactions, TPS system provide the answer to the to these questions in a timely manner. जनरली जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उन्हें हम जनरली टाइमली मैनर पे उन्हें गिव अप करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. तो जनरली फंक्शंस ऑफ टीपीएस मीन्स हमारा इनपुट क्या रहेगा, उस पर हम प्रोसेसिंग क्या करेंगे, और उस पर आउटपुट क्या रहेगा, यह सब चीज़ें आती है हमारी टीपीएस में. तो उनके एग्जांपल हो गए हमारा पेरोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम.
उसके बाद आएगा सिस्टम फॉर पेमेंट एंड फ्रॉड ट्रांसफर, बिलिंग सिस्टम टू सेंड इनवॉइस टू द कस्टमर, सिस्टम टू कैलकुलेट द वीकली एंड मंथली टैक्स पेमेंट। सो हमारे जो एग्जांपल्स है तो उसके टीपीएस के जो भी टाइप्स है उस टाइप में हम ये एग्जांपल देखने वाले हैं। सो देर इज अ टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। नंबर वन इज अ batch processing, second one is a real time processing. The batch processing require separate program for input, process and output. For example, हमें जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स है तो बैच प्रोसेसिंग का ट्रांजेक्शन्स है उसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, हमें कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करना है उसके लिए हम एनएफटी यूज करते हैं। तो वो एनएफटी हम वन टाइम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें सेट ऑफ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ इनपुट्स चाहिए, जैसे कि हमें कहाँ से कहाँ तक, मीन्स कौन से कस्टमर को एनएफटी करना है, किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन होगा, ये डिटेल्स हमें इनपुट में चाहिए। उसके ऊपर एक फर्दर प्रोसेस होगा और उससे जो आउटकम निकल के आएगा, मीन्स वो ट्रांजैक्शन डन होगा। सो दैट द इंफॉर्मेशंस इज covered in a batch processing system. The batch processing is a resource saving transaction type that store the data for processing at a predefined time. Means बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि हमें मान लो एक बार हमारा एनएफटी हो गया तो हम वेन एवर वी आफ्टर सेकेंड टाइम, एट दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी सेव अ डेटा, सो इट विल बी इट विल बी रिड्यूस अवर टाइम और प्री डिफाइंड टाइम में हम वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द बैच प्रोसेसिंग systems. It is useful for enterprises that need to process large amount of data using a limited resources. सो बैच प्रोसेसिंग जनरली जो हमारी इंडस्ट्री रहती है या बैंक रहता है जनरली वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा जो लार्ज अमाउंट डेटा है वो कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करके उसको हैंडल करते हैं। तो उसके बैच प्रोसेसिंग के दो एग्जांपल्स है, क्रेडिट कार्ड मंथली स्टेटमेंट फॉर द कस्टमर्स, लाइब्रेरी बुक ओवरड्यू रिमाइंडर्स, journals missing issues reminders, and neft transfers means national electronics fund transfers. So that the examples of batch processing. Second one is a real time processing, means it involve a continual input, process and output data। हमारा जो भी फोन पे, गूगल पे, इसका जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग में आता है। the data must be processed in a small period of time, नियरली अ रियल टाइम मीन्स हमारा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसे हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहेंगे। अ बैंक कस्टमर विड्रॉ अ सम ऑफ मनी फ्रॉम हिज और हर अकाउंट, द अकाउंट बैलेंस अपडेटेड एज सुन एज पॉसिबल्स, दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम प्रोसेसिंग। मीन्स तुरंत, मीन्स जितने जल्दी हो सकता है जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग या रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे। तो उसमें एयरलाइन टिकट बुकिंग आता है और आईएमपीएस मीन्स immediate payment service. So in this lectures we have seen a two type of transpo uh, two type of information system. First one is a office automation system and second one is a transaction processing systems. So we will see in next lecture management information system, decision support system and expert system. So these 3 points we will cover in our next lectures. Thank you.